Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 16th August 2021 and I am teaching you chapter number 6. The name of the chapter is Birds, our feather friends. Birds our feather friends. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video student, I am explaining you about different types of nest. Okay, in previous video student, I am explaining you about different types of a nest made by the birds and what is the reason why the birds made nest. So birds come in which category? Birds come in oviparous category. So birds come in oviparous category because they lay eggs and the young one comes from the eggs. So after the birds lay eggs and then for few days the birds sit on the eggs and the birds sit on the eggs so that the eggs are warm. And what is the reason for that? The reason is that due to sitting of the birds on the eggs become warm also and the growth of their young one take place. And when the egg hatch, the young ones come out from the egg, then the parents bird, they feed their young ones and even they help them how to fly. And when the baby bird learn how to fly, they left the nest. So we discuss different types of a nest and what are the materials which they are using, the materials which are available in the surroundings. So the material they use are twigs, leaves of the plants, cotton, cloth, thread, iron wire also. The crow use iron wire because the nest of the crow is very strong. So some of the nest which I explained in the previous video, that is first is what is the nest of the tailor bird. Then I explained you the nest of the weaver bird, how eagle and vultures make their nest, how the woodpecker make their nest in the trunk of the tree, and then now let's start with the penguins. So penguin is also a bird. So penguin is a bird, but penguin is also a flightless bird. पेंगुइन भी बेटा उड़ नहीं सकते, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रिच इज ए फ्लाइटलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. इन द सेम मैनर पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई. सो हाउ दे यू ऑल सी इन द पिक्चर, दिस इज द नेस्ट ऑफ द पेंगुइन. ये लोग छोटे छोटे स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, पीबल्स, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ ए नेस्ट इज मेड बाय द पेंगुइन. ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको ऑस्ट्रिच का भी नेस्ट दिखाया था. ऑस्ट्रिच इज अ वेरी बिग बर्ड. ओके, ऑस्ट्रिच इज आल्सो अ वेरी बिग बर्ड एंड इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड आल्सो. दैट इज द रीजन द ऑस्ट्रिच आल्सो मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड. वो भी ग्राउंड में ही अपना नेस्ट बनाते हैं क्योंकि वो क्या है बेटा, और बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकते, ठीक है. इसी तरह पेंगुइन भी है. पेंगुइन भी क्या है, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है. दूसरे बर्ड्स की तरह ये अपने नेस्ट को ट्रीज पे नहीं बना सकता क्योंकि ये फ्लाइटलेस बर्ड है. इट कैन नॉट फ्लाई लाइक द अदर बर्ड्स की तरह ये क्या फ्लाई नहीं कर सकता. तो आपको मैंने दिखाया. सो द पेंगुइन नेस्ट इज
how they make their nest by collecting few pebbles and stones, and penguin make their nest on the ground. उनका नेस्ट कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे होता है. And how they make their nest? They make their nest by collecting some pebbles and stones on the ground. In this manner penguin birds make their nest. और ये penguin birds बेटा ये जहाँ पे क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, ठीक है, जहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे पेंगुइन बर्ड्स होते हैं, ठीक है. सो द penguin makes its nest by collecting by collecting by collecting a few pebbles and stones, ठीक है, छोटे, ठीक है. तो स्मॉल जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, उनको कलेक्ट करके ये अपना नेस्ट बनाता है. और ये अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है बेटा? Penguin makes its nest by collecting a few pebbles and stone on the ground, ठीक है, on the ground, ठीक है. ये हो गया पेंगुइन के नेस्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. देख लो, इसने स्मॉल स्टोन्स और पीबल्स कलेक्ट कर रखे हैं. किस पे कलेक्ट किए हैं? ग्राउंड पे. किस पे कलेक्ट किए हैं? ग्राउंड पे कलेक्ट किए हैं. तो इन दिस मैनर द पेंगुइन बर्ड्स मेक देयर नेस्ट. नाउ केयरिंग फॉर द यंग्स, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल कवर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज केयरिंग फॉर द यंग्स. Caring for the young. अब देखो, what is caring for the young? So what's happened student? The animals which give, whose young ones come out from the egg, that type of animals come in the category of a oviparous animals, ठीक है, जिनके यंग वन बेटा अंडों से बाहर आते हैं, जिनके बच्चे. तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग ओविपेरस कैटेगरी में रखते हैं. इज इट क्लियर? नाउ द मदर बर्ड आफ्टर मेकिंग द नेस्ट, द मदर बर्ड lay the eggs in the nest, and to keep the egg warm for many days she sit on the egg. In this manner the eggs are hatched, ठीक है. मदर बर्ड क्या करती है? हाउ द मदर बर्ड कीप हर एग्स वार्म बाई सिटिंग ऑन देम, ठीक है. तो फॉर many days the female bird sit on the egg so that the eggs are warm. And when these egg hatch, मतलब जब जो एग की जो आउटर शेल होगी, आप सबने अंडा देखा होगा ना बेटा, एग सबने देखा है. तो आउटर शेल जब ब्रेक होती है एग की, तो उसमें से उनके चिक्स बाहर आते हैं, ठीक है. जो यंग वन होते हैं बर्ड्स के, यंग वन को क्या बोलते हैं? चिक्स बोलते हैं. तो फ्रॉम द एग द चिक्स कम आउट. नाउ बोथ द पेरेंट्स बर्ड दे फीड देयर यंग वंस. अब पेरेंट्स बर्ड जो हैं, ठीक है, वो अपने यंग वन को क्या करते हैं? फीड करते हैं. एंड दे आल्सो सिट इन द नेस्ट विद देम. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट?
रीज़न ये होता है बेटा, व्हेन द चिक्स कम आउट फ्रॉम द एग एट दैट टाइम दे डोंट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी पे फेदर्स नहीं होते, ठीक है, वो विदाउट फेदर पैदा होते हैं एग में से। जो जब जब चिक्स एग्स में से बाहर आते हैं ना बेटा, तो उनके बॉडी पे कोई फेदर नहीं होता है। सो टू कीप देम वार्म द मदर और पेरेंट्स सिट इन द नेस्ट आल्सो विद देयर चिक्स एंड दे फीड देयर चिक। ओके, उनको खाना खिलाने का काम कौन करते हैं? उनके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। फीमेल बर्ड और मेल बर्ड वो क्या करते हैं? उसको फीड करते हैं। ओके, बिकॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ दे आर वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर होते हैं और फेदरलेस होते हैं, ठीक है। बर्थ के समय उनके चिक्स बहुत ही वीक होते हैं और क्या होते हैं? फेदरलेस होते हैं। फेदरलेस मीन्स उनके बॉडी पे कोई भी फेदर नहीं होता। ओके, द पेरेंट्स फीड देम एंड कीप देम वार्म, ठीक है। So when the chicks grow, after few days the feather also start coming on their body, ठीक है। जब धीरे धीरे चिक्स की ग्रोथ होती है तो उनके बॉडीज में फेदर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन द पेरेंट्स बर्ड्स हेल्प देम हाउ टू फ्लाई। उसके बाद पेरेंट्स बर्ड उनकी फ्लाई कैसे करते हैं उसमें भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। छोटा बर्ड बेटा डायरेक्टली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं उड़ता, स्टार्टिंग में वो लोग बहुत स्मॉल डिस्टेंस उड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स बर्ड्स को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को अपने एनिमीज से क्या करना है? सेव करना है। क्योंकि बहुत से अदर बर्ड्स भी हैं जो कार्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं, वो अंडों को भी खा जाते हैं और बच्चों को भी खा जाते हैं। बच्चे तभी सेफ होते हैं जब उन्हें बहुत बढ़िया से उड़ना आ जाएगा, क्योंकि जब उन्हें उड़ना आ जाएगा तो वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, उड़ के वो बच सकते हैं। बट व्हेन दे आर वेरी स्मॉल, अभी स्मॉल फेदर्स आना उनकी बॉडी पे स्टार्ट हुए हैं, एट दैट टाइम द पेरेंट्स बर्ड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज। पेरेंट्स बर्ड क्या? एनिमीज से उनको प्रोटेक्ट, बचाने का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि when they are safe when they learn how to fly, वो तभी सेव होंगे जब उन्हें पूरा फ्लाई कैसे करना है, फ्लाई करना जब आ जाएगा, जब उन्हें फ्लाई करना आ जाएगा तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे एनिमल्स से। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक दैट इज केयरिंग फॉर द जंग। सो हाउ डू दे डू केयरिंग फॉर द वन टाइम आई डू द रिकैप्चुलेशन। आप समझ लो जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे केयरिंग करते हैं अपने यंग वंस की। सबसे पहले वो क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं। इन द नेस्ट द फीमेल बर्ड ले द एग्स एंड देन द फीमेल फॉर फ्यू डेज द फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग्स सो दैट द एग्स आर वार्म। और जब बेटा एग्स वार्म होते हैं ना तो उससे क्या होता है? बच्चे किसके होते हैं? एग के अंदर होते हैं, तो उनकी भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होती है। इसलिए मदर बर्ड जो होती है वो एग पे बैठती है। उसके बॉडी के वार्म से जब एग वार्म होंगे तो उसके अंदर होते हैं चिक्स, उनके बच्चे, तो उनकी ग्रोथ होती है। एंड व्हेन द एग हैच, जब अंडा ब्रेक होता है, उसकी आउटर शेल एग की ब्रेक होती है तो उसमें से यंग चिक्स बाहर आते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ दे आर वेरी वीक एंड दे आर फेदरलेस, उनके पंख भी नहीं होते। और जब मैंने डिफरेंट फेदर्स ऑफ ए बर्ड आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि डाउन फेदर क्या होते हैं? जो स्मॉल फेदर होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं और जिससे कि बर्ड की बॉडी क्या रहती है? वार्म रहती है। तो अब फेदर ही नहीं है तो कैसे वार्म रहेगी? तो इस समय क्या करते हैं कि पेरेंट्स बर्ड वन बाई वन, कभी मेल कभी फीमेल, दे सिट इन द नेस्ट विद देयर चिक्स सो दैट दे आर वार्म। एंड जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होने लगेगी उनके बॉडी पे आप चेंजेस देखोगे। क्या चेंजेस आएगी? अब स्लोली उनके बॉडी में क्या फेदर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, फेदर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अब उनको फीड करने का, जब उनके पास पंख नहीं है वो नेस्ट में, तो ऐसे समय में उनको फीड कौन करती है? फीमेल बर्ड और मेल बर्ड, दे फीड देम। Okay, and when there is a growth the feathers start coming in the body. After that the female bird also, or you can say
after that when small feathers start coming in their body, so the parents bird जो होते हैं उनको फ्लाइट करना भी सिखाते हैं कि कैसे उड़ा जाता है। ओके, एंड दे आल्सो सेव देम फ्रॉम द एनिमीज, उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं दूसरे एनिमल से। एंड when chicks start flying, then they left the nest। जब chicks फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें फ्लाई करना आ जाता है, तो वो फिर वो क्या करते हैं, नेस्ट को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे, इन द मैनर जो बर्ड्स हैं वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ह्यूमन बींग्स अपने यंग वंस की, आपके पेरेंट्स ने भी, आप तो आज बड़े हो गए, थर्ड क्लास में आ गए, लेकिन एक समय हो गया आप भी बहुत स्मॉल बेबी हो गए, तो आपके जैसे ह्यूमन बींग्स भी अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। इस तरह कुछ एनिमल्स भी हैं जो अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ एनिमल्स भी हैं बेटा जो अपने बच्चों की बहुत क्या करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, एंड डिड यू नो में आप देख लो, द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट बर्ड। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, सबसे बिग बर्ड या सबसे लार्जेस्ट बर्ड जो हमारे प्लेनेट पे है उसे हमने क्या बोला है, ऑस्ट्रिच बोला है। और ये बहुत ही वेट में भी ज़्यादा होता है। इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी रनिंग स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है। 1 आवर में 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। सोच लो 1 आवर, तो आप एक पिक्चर देखने में ख़त्म कर दोगे, कोई कार्टून चैनल देखोगे 1 घंटे का 1 आवर, और उस 1 आवर में अगर ऑस्ट्रिच ने आपके पास से चलना स्टार्ट किया है तो फिर आप पता लगाओगे वो कितनी दूर गया। तो 1 आवर में वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर गया, क्योंकि इसकी स्पीड बताई है, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर इन 1 आवर। बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच बहुत तेज दौड़ता है। 1 आवर टाइम में इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, इसीलिए बुक में दिया है 70 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये जो ऑब्लिक लग के हावर लिख दिया, इसका मीनिंग ये है 70 किलोमीटर ऑब्लिक हावर। तो इसका मतलब हुआ कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 आवर में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। सोचो कितना तेज दौड़ता होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, और की वर्ड है इस चैप्टर का, ओनली वन की वर्ड इज गिवन, दैट इज टैलेंट्स। टैलेंट्स मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया था, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके फिफ्थ और क्लास क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग और शार्प होते हैं, जिसको हम लोग टैलेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ओनली वन की वर्ड इज गिवन, दैट इज टैलेंट्स। टैलेंट्स, TALONS, टैलेंट्स। सो शार्प क्लास ऑफ, sharp class of flesh eating birds। Sharp class of flesh eating birds। सो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के जो शार्प क्लास होते हैं, जो पंछी होते हैं जिससे वो अपने फूड को होल्ड और कैच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेटा टैलेंट्स भी बोलते हैं। उसको हम लोग टैलेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ऑल द टॉपिक्स वी हैव, I explained you all the topics of this chapter. Now the next thing is that student, now we will complete the book exercises of the chapter. So again I am telling you student, the book exercises you will complete in the book only। book exercises को बेटा आप सिर्फ बुक में लिखोगे। ठीक है, और क्लास वर्क कॉपी में हम क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है,
क्लास और कॉपी में क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर और डायग्राम बनाएंगे। अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि ईवीएस की कॉपी कैसी होती है। ईवीएस की कॉपी इंटरलीफ कॉपी होती है। दिस इज द ईवीएस कॉपी, ये ईवीएस की कॉपी है। ये क्या है, प्लेन पोर्शन है। हियर यू विल ड्रॉ ए, हियर you will draw diagram. Okay, you will draw the diagram in this plain page, and next page is like this. Okay, next page, this copy is known as interleaf copy. One page is plain and one page line, single line copies. So in this portion you will write, and in this portion you will draw the diagram. This is a single line interleaf copy. Is it clear? So next thing, now we will start the book exercises of the chapter. So all of you open page number 33. Page number 33. Now student, we will start the book exercises of the chapter, and the question number A is tick the correct answer. Question number A, tick the correct answer. First question is tick the correct answer. Now question number 1. These birds have strong sharp these birds have strong sharp and hooked wings. So this type of beak is present in the carnivorous bird because they are flesh-eating birds. That is the reason their beak is very strong, their claws are very sharp, and the beak is hooked shape. For example, this is a beak. So this type of a beak they have. Okay, this type of a beak they have, hooked shape, so that because they are flesh eating birds, and as you know flesh is very hard, so beak is like a hooked, so that they can tear the flesh, जिससे कि वो लोग जो मांस है उसको चीर सकें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकें, जैसे कि वो उसे ईट कर सकें उसके बाद। ठीक है, सो हुक्ड शेप बीक्स. So the options are given. Question number A. First option is eagles, vultures,
eagles, vultures, and sparrow. Second is vultures, vultures, kites, pigeons. C option is eagle, 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 vultures, and kites. See, question is these birds have strong, sharp and hooked beaks. Option A, eagles, vultures and sparrows. So this is not a right answer. हमें बेटा 3 ऑप्शन में वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे कार्निवोरस बर्ड्स हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन ए, वाई दिस इज नॉट ए राइट आंसर बिकॉज ईगल इज अ कार्निवोरस, vulture is also a flesh eating bird, but sparrow is a very small bird and it has a small beak. Okay, so sparrow is not a flesh eating bird. Second option, vulture, yes it is a carnivorous animal. Kite is also a carnivorous, they are also flesh eating bird. But pigeon is having a small beak, short beak, small नहीं, short beak का वो pigeon has a short beak and they also नॉट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ठीक है. थर्ड ऑप्शन देखो, ईगल, वुल्चर्स एंड काइट. यस, दिस इज द राइट आंसर बिकॉज ईगल इज आल्सो ए फ्लैश ईटिंग बर्ड, वुल्चर इज आल्सो ए फ्लैश ईटिंग बर्ड एंड काइट इज आल्सो अ फ्लैश ईटिंग बर्ड. Second, this bird uses its beak like a needle, to sew leaves with material like thread and wool. Option A, beaver bird. Option B, tailor bird. Option C, woodpecker. Okay, now see, this bird uses its beak like a needle to sew leaves with material like thread and wool. ये leaves में अपने beak से होल्स करके, जैसे टेलर करता है ना, क्या करता है वो स्टिच करता है धागे से, कपड़े को सिलता है, तो ये भी अपने
बीक से स्मॉल स्मॉल होल्स करके पत्तों को, 4-5 पत्तों को एक संग क्या कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं। या तो बड़ा पत्ता हो तो उसी को फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं, या छोटे छोटे पत्ते हो तो 3-4 पत्तों को आपस में स्टिच कर देते हैं। तो दैट इज डन बाय द टेलर बर्ड। ये कौन करता है, टेलर बर्ड। वेवर बर्ड क्या है, वेवर बर्ड नहीं स्टिच करता, वो जैसे कपड़ों को बनाया जाता है, बुनकर लोग बनाते थे वेव करके, आपस में क्रिस क्रॉस करके थ्रेड्स को जोड़ जोड़ के क्लोथ बनाते थे, तो दैट इज अ वेवर बर्ड। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। वुड पैकर इज ऑल्सो नॉट ए राइट आंसर बिकॉज इट मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, इन दिस मैनर इट मेक्स द नेस्ट आल्सो। So the right answer is टेलर बर्ड। Thank you student.